Friends, today we will going to show you Redmi Note 4 unboxing. So let's start. ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये मैंने अभी 14 तारीख वाली सेल में ऑर्डर किया था और ये मुझे आज 22 तारीख को अवेलेबल हुआ है। तो इसकी पैकिंग करीबन ऐसी कुछ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपन इसको अब खोलते हैं। इसका बिलिंग जो आया है मुझे वो 11,999 का आया है। ये वेरिएंट 3 GB और 32 GB वाला वेरिएंट है। इसका कलर मैंने मंगाया है वाइट गोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। आंटी जी So this is कार्ड the packet. पैकिंग काफ़ी अच्छी है। Card. So let's start. ये Redmi Note 3 का सक्सेसर डिवाइस है जो कि Xiaomi ने लॉन्च किया था पिछले साल। This is the packing. Very pretty. तो द बॉक्स इज फुली वाइट, आप देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आगे फ्रंट में खाली 4 लिखा हुआ है और Side panel में Redmi 4 Note 4 MI. So let's start. पीछे मेड इन इंडिया का टैग भी है। तो यहाँ पे साफ साफ कोने पे लिखा हुआ है कि 3 GB रैम 32 GB इंटरनल। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's start. First unbox it. सबसे पहले हम इसकी सील खोलते हैं। फ्लिपकार्ट ने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है हमें। और आप देख सकते हैं कि Xiaomi के सारे फ़ोन्स अधिकतर आपको वाइट बॉक्स और इसी वे में पैक ये मिलेंगे। तो ये भी सिमिलर ही है। So let's open this box. And this This is the Redmi phone. Note 4. लाइक दिस। So now देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या आया है। box accessories. Templates. पेपर वर्क, One USB charger. Ampere. How much is not written in it. Data cable. Normal data cable. Length is something 1 meter and 1.5 meter. And there is no SIM ejector here. And there is SIM ejector here. So let's start. The phone look wise is very pretty from one side, and you can see this is 2.5D curved glass and on the front. So let's switch on this phone. जब तक ये फ़ोन स्विच ऑफ होता है चलिए अपन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑन द अबाव आपको एक 3.5 mm जैक मिलता है। साथ में इसमें IR ब्लास्टर की है। Xiaomi की ये बहुत ही अच्छी खासियत है, इसके हर फ़ोन में आपको IR ब्लास्टर अवेलेबल हो जाता है। ऑन द बैक पैनल यू कैन सी दैट देयर इज अ 30 मेगापिक्सल रियर कैमरा एंड अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। Xiaomi का कहना है कि ये जो फिंगर स्कैनर है ये Redmi Note 3 से काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसके अलावा ऑन द बॉटम साइड आप देख सकते हैं कि इसमें जो 2 अपने ग्रिल्स दिख रहे हैं, इसमें से एक स्पीकर है और एक खाली कॉलम है और इसमें नॉर्मल USB है, इसमें टाइप C नहीं है। तो चलिए इसका साइड ओवरव्यू देखते हैं। इसमें जो राइट हैंड साइड पे आपको अवेलेबल होगा ये होगा एक पावर बटन और साथ में वॉल्यूम रॉकर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिम है। और मैं आपको बता दूं कि जो सिम स्लॉट है ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। चलिए सिम स्लॉट चेक कर लेते हैं एक बार। This This is the SIM slot, hybrid SIM slot, either one memory card or SIM card or 2 SIM cards. So let's start. English India or English United Kingdom as you like. Okay, let's select India. Choose your region. India. Where is the India? There is India. select it. So let's starting this phone.
take some time to start, but it's okay. There is a warning written here for safety. Do not disassemble the battery without specified tools. You can see that. Now the region is selected. Keyboard, Google keyboard or Swift keyboard. We select Google keyboard. Then if network, skip. Terms and condition, accept it. And then checking for the SIM cards. No SIM card is available in it. If you know, at your skip कर देते हैं this location वगैरह. Okay, agree. Yes. Theme select. I like default pink blush or ocean breeze. Ocean breeze is pretty good. Like this, and you can select it. जैसे कि Xiaomi ने अपने को दिया है, इसमें 2.5D का ग्लास है, लेकिन इसमें कोई ओरिजिनल स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है, ना ही कोई गोरिल्ला ग्लास है, ना ही कोई ड्रैगन टेल है. तो Xiaomi की ये थोड़ी गंदी आदत है. Loading apps. Okay, this is unboxing of this phone. After this we make another video again about its views and what are its pros and cons. So that's it.